Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Welcome to the 23rd core of Birth Alive Story Circle, the core that connects us one life to the other. I'm your host and host, Sneha Bakkal, who flows with you in your journey of pregnancy, labor, birth, and postpartum. Hence, a certified birth doula and a traditional birth keeper. Our today's guest is Sister Sailee Khanolkar. She is my Laibhari mom and a loving friend. She's from Thane, but currently living in Pune. She works in pharma R&D sector. She loves traveling and exploring new places. She's an optimistic person. She truly believes that everything in life always happens for good. So, with that, welcome, Saini. Thank you, Sneha, and hi everyone. Uh, So, Saini, what we'll do is we will talk about your, as this is your first pregnancy and birth story. So, you'll talk about your history of PCOD you have, and then your optimistic lifestyle and the spirit of living, and how did you, get into pregnancy? How did you get to know about natural birth and all of that? Yeah, and then the birth story as well. So, okay. So starting from my PCOD thing. So the time when I started menstruating, from that time onwards, I was having very much irregular menses. So I think I started my menses at 13, 14, when I was 14 age, 14 years old. So that time I started, but those were so much irregular, like 2 months, 3 months apart. So I visited so many doctors. So that time they were like, don't worry, it's just start of the menses, so the irregularity is common. Once you will pass the 18th age, then it will settle off and you will have a regular period. So I waited, I didn't panic. I was like, okay, let's see after 18 come 18 years of age. So I didn't panic much, and I don't used to think about that much. So after 18 after completion of 18 year, I visited again that doctor. So she told me to do a sonography. So after doing the sonography, I was diagnosed with PCOD. So she told me that it is a lifestyle disease, so you have to change your lifestyle, exercises, food. I was working on that as well. Like uh, there was no any symptoms like the hair fall or weight gain or pimples. Nothing was there in my case. Only the common basic thing was irregular menses, like 3 months apart, 4 months apart. So they told me, like it is not much, like when you will change your lifestyle and food habits and exercise daily, brisk walking and all, you will be able to get your periods on time. So I did that, but there was no use. I think I took so many medicines. Initially I started with allopathy. Then someone told me that go for ayurvedic treatment. Ayurvedic does help. So I went for an Ayurvedic treatment. I took that as well for 6 months. But when the treatment was there, like for 6 months, when I was taking the medicines, my menses were on time, like 28 days or in 30 days, I was able to get them. But as soon as I stopped the medicine, again the same thing would start, like 2 months apart, 3 months apart. I think after 21 age, I was not having periods until I popped a medicine. That medicine comes, no, for hormonal medicine is there something, or 3 days course is there. Acha. Of some medicine. So I have to pop that pill for 3 days, and then my menses would come. Otherwise, they won't come only. By naturally, they won't come only. So I don't used to think about it much, but my mom was very afraid, like what is this, what's happening. So again I switched to another doctor, which was homeopathy. I did her treatment for next 6 months. Then I came to know that my she did some blood tests of mine. So in that blood test, the testosterone levels were so much high.
In the first month only, she made that blood thing. So in that blood thing, she found that the everything is normal. The testosterone level was high. It was something 104 or something. I think it is. It should be less than 60 or 40. I think, but it was double the thing, 104. Huh? So she told me, okay, let's start the treatment for 6 months, and again we will do a blood work after 6 months. So I was like, okay. Then I took the treatment. I was having the menses on time as the medicines were on. So after the 6 months, she told me that, okay, we'll again do a blood work. Let's see how much the testosterone level has been dropped. So again, I did the blood work, and that time it was earlier 104, and after 6 months it went to 108. so so I stopped going to that doctor. I was like, I was expecting like it will come down, but it was same or it got even more. The levels went up. So I just stopped going to that doctor. And then again I went to Dr. Arohi. Actually, she was very new at that time. She was practicing very newly that time. So she told me that this is common, PCOD is common, don't worry much about it. It will get resolved on its own when you will when you are trying to conceive. That time you focus on this PCOD thing. Otherwise, you don't need to worry much because you are very active and there are no any other symptoms that we should work on. So I kept that on mind that okay, ये तो चलता ही रहेगा, क्या है इसमें इतना. So after six months, like after 6 months, I used to take that pill because okay, 6 months have gone, no period. Okay, I'll take the pill. 4 5 days bleeding normal, and then again after 6 months. So yearly I used to get only 2 times menses. So how lucky you are. Okay, I am lucky only. I also used to think, okay, how lucky I am. No period pain, no PMS, nothing. I was just very happy with that. And in 20 December 2021, I got married. And I got married in 20 December 2021. And after marriage, I didn't got my periods for longest, like 9 months. 9 months of time. And I also forgot to take the medicines after 6 months. Huh? I was busy in newly married thing and exploring and doing my own thing. So I completely forgot. And one fine day, my mom asked me, when was the last time you menstruated? I told her that before marriage, like in November, I took medicines because the next month my this wedding was there. So I took a month ago. So we counted, oh, it's like 9 months. 9 months, still no periods. So I again popped that pill, and so in the first till the first anniversary, I only had one menses throughout the whole year. So एक्चुअली आई डेंट थॉट अबाउट इट ओनली कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेगा, आ रहा है, आने दो, ऐसे. मतलब आई वाज नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट इट एज like Arohi and all. I think 2 3 more doctors have told me that no, nothing to worry. When you will try to conceive, that time you come to us, then that time we will look into this. So मैं इतना bother नहीं करती थी वो. So after 2 years of our anniversary, we thought of planning. So December second anniversary हो गया. Then in January I went to a doctor for like नहीं second anniversary से पहले ही 5 6 months. आई थॉट मतलब मेरा थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड ज्यादा है लाइक ऐसे. तो मैंने सोचा अगर सेकेंड एनिवर्सरी के बाद I'll start like this process, so it will take 6 months or 1 year, and then after I will conceive. तो वो थर्ड एनिवर्सरी के बाद कब होगा. तो मैंने वो सेकेंड एनिवर्सरी से पहले 6 months I started working on this PCOD thing, like to correct this PCOD thing. So that I went to a doctor. My family doctor, family physician has suggested a gynac. So I went to her. So she was like, okay,
currently, do you want to conceive? I was like, no, not now, but after 6 months I will try. तो वो बोली कि ओके, सो फिर ये 6 मंथ्स हम लोग मेंसेस करेक्शन के लिए ये करेंगे, 6 मंथ्स ट्राई करेंगे. आई वाज लाइक ओके, सो अगेन दैट हार्मोनल 21 days वाला टैबलेट स्टार्टेड, and I was having menses on time, like after 28 days and all. Then in after 6 months, I was ready for conceiving. So I told her that I'm ready for for conceiving. So she told me that we have to undergo some follicular testing, so that we will come to know that what's happening inside and how the follicles are maturing or not, and accordingly we will move ahead. So she clearly told me on the day one that we will try this thing, like the medicine thing, for conceiving for first 6 months, and if not it is happening by medicine, then we will go for IUI, that is injection based conceiving. And if for next 6 months, and if that is also not working, then we will go for IVF. So on the first day only, she made it clear that these are the steps we are going to get through. Like if not happen by the medicine, then we will move for injection, then IVF. I was like, okay, so this is, I don't want to get to the injections because I am so much scared of the injection. I'm like कि मुझे 100 मेडिसिन दे दो, मैं खा लूंगी, मुझे कितना भी मारो मैं मार खा लूंगी, मुझे कितना भी पेन दो मैं सह लूंगी, लेकिन इंजेक्शन मत दिखाओ. मतलब दिस वाज द ओनली थिंग कि मैं कुछ भी करने के लिए, मैं कितना भी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए. सो ये था. तो आई वाज लाइक नहीं नहीं, मुझे ये 6 मंथ्स का विंडो पीरियड है, एंड आई वांट टू मेक इट हैपन इन दिस 6 मंथ्स ओनली. आई डोंट वांट टू go to that IUI and all thing. So I started with my journey on that medicine wala thing. So letrozole is generally given for maturation of the follicles. So in the first month in January, she gave me letrozole tablet. So after 40, I think on the 20th, on the 20th day, I ovulated. So generally it is like 14th day, normal people ovulate on the 14th day. So I ovulated on the 28th day. So after that 28th day, after 20 days, so almost after 50 days, I got my second period. So she told me, okay, so your ovulation is quite late. It must happen before, like on 14th or till 20th day of the menses. So so second time when I went to her, she again gave me the same medicine with same dosage. So I was like, ki, how come if she knows that in the first cycle my menses are late, like I am ovulating late, so she must modify some medicine na, कि ये पहले आना चाहिए, like 28th डे पे आ रहा है, तो she don't want it to on the 28th, so we want it to be 14th. So she must have modified some medicine accordingly. But वो डॉक्टर ने नहीं, वो सेम ही मेडिसिन दिए मुझे, सेम डोसेज ही दिया लेट्रोजोल का. सो आई वाज क्वाइट डाउटफुल कि ऐसे क्यों किया. सो अगेन आई टुक दैट. देन सेकेंड मैंने बोला ओके, कुछ होगा, उनका कुछ कैलकुलेशन होगा. So second month I ovulated on 25th day, so 3 days earlier. Again in 25th, and after that I got my menses in next 20 days. So I thought, okay, second time also same happened. The only 3 days earlier it went. So I calculated, okay, for in say 2 months I ovulated 3 days earlier. In 6 months I ovulate at 14th day or so. I'm so much calculated. So I thought I researched about it, ki why it is happening, how much the dose should be, how we can correct this ovulation, the researcher mind and all the Google thing and research paper. And I found out that there must be some dosage verification for the dosage, like higher dosage for this to bring the ovulation earlier. So
before going to her third time, I searched another doctor for like reconfirmation, like it is the only thing, I'm doing it correct, like the doctor is doing correctly or not. So I to verify that, I googled the gynec in Thane. She was in Mulund actually, the earlier one. Then I search for someone in Thane. So when I searched for the Thane gynec, I got to know about the Arohi madam. Actually, I have went to her before earlier also for PCOD, and I read her reviews and all. So she was doing well and all. Then I went to her. I showed her my file that I have been taking this letrozole for last 2 months, 2.5 dosage. So she told me, okay, 2.5 is not working for you. We will increase the dose to 5. Let's see what happens with 5. Which hit me like, okay, this is correct approach, I think. Uh, but then also I went to the first wala doctor in the third month to cross check. So the in the third month also, that doctor gave me that lower dose only, like 2.5 mg wala dose only. I again asked her like in 2 times my ovulation is late, like on 20th day and 25th day. Then why can't we increase the dose? Then she told me, no, it's a general practice to give this dose only, we can't increase the dose. I was like, okay. And on the same day at night, we went to Dr. Arohi, and she told us to take the higher dosage for a better, like for the ovulation to happen earlier. And I followed that in April. Yeah, in April, I think, yes. And after that, I was like, and the I was doing the follicular testing and all. And on the 14th day, I ovulated by taking that higher dose of letrozole. So on the 14th day, I ovulated, and in the next month, like on the same thing, on the same time, I conceived only. So I was not much aware of that. Like my cousin's engagement was there, so I totally forgot about the conceiving thing, and I was totally enjoying engagement dances and the celebration decoration part. Everything was, I was busy with that, and I forgot about my periods and this thing. And after a month, my husband asked me that, have you got your menses? No, I didn't got my menses. So I thought, okay, let's check. Then we checked, and it was positive. So before that, like 2 4 days, 3 4 days before that checking, I was in the swimming pool jumping from heights, and I was thoroughly enjoying everything. And I was like, what is this, how can it happen? I was I did went into a swimming pool, I did so many activities. How can I conceive? I was very much, I don't know, like how did it happen, but it happened the first thing only when we went to Arohi. So after conceiving, the many research things started. Like everyone was like everyone gives you thought कि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, बी प्रिपेयर्ड, नींद नहीं आएगी रात को, वॉमिटिंग होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. लाइक मैं कुछ फील करने से पहले ही जमाना पूरा फील करके सब मुझे बता रहे थे कि नहीं ऐसे होगा, वैसे होगा. एंड फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई वाज, मेरे दिमाग में से था नहीं, मुझे ये ऐसे कुछ नहीं चाहिए, आई वांट अ हैप्पी प्रेगनेंसी थ्रू आउट. सो मेरे दिमाग में ही नहीं था. एंड आई डिडंट वॉमिटेड वंस आल्सो इन माय 9 months, एंड आई वाज थरोली एंजॉयिंग माय प्रेगनेंसी. एंड एक मतलब my mom had a C-section for me and for my younger sister also. Both the time she had a C-section. So वो भी एक था कि सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा भी सी सेक्शन ही होगा, जैसे माँ का होता है वैसे ही मतलब बेटी का भी होता है. सो बी प्रिपेयर्ड, सी सेक्शन होगा. बट वो मतलब 2 कान का मैंने यूज किया, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का.
तो मैंने इतना सोचा नहीं उसके, मतलब मैंने वो दिमाग में ही नहीं लाया वो बात की ऐसे हो सकता है क्या. बट आई वॉज वेरी एक्टिव, लाइक 6,000 स्टेप्स डेली, लाइक फ्रॉम अर्ली ऑनवर्ड्स ओनली, लाइक 6 months बिफोर, जब से मैंने पीसीओडी करेक्ट करने का स्टार्ट किया तब से आई वॉज वॉकिंग daily 6,000 steps and doing some basic yoga at home. So I was very active. So प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद इन द 30th वीक ऐसे ही आरोही के पास मंथली विजिट के लिए, मंथली चेकअप के लिए मैं जाती थी. तो इन द 30th वीक आई हैड अ थॉट कि इफ इट इज पॉसिबल कि बिना निडल या फिर बिना आईवी का प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या. बिकॉज वेन एवर आई यूज टू गेट अ इंजेक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, जब भी मैं इंजेक्शन लेने जाती थी, या वैक्सीन हो या फिर वो टीटी का हो या फिर कुछ और हो, तो मतलब मैं बहुत रोती थी, मम्मी मम्मी करके चिल्ला रही थी. तो एवरीवन, इतने बड़े हो गए हो तो भी इंजेक्शन से डर लगता है, कैसे करोगे. एंड द नर्सेस, बेसिकली द फीमेल्स यूज टू टेल मी, एक इंजेक्शन से डरते हो तभी डिलीवरी के टाइम पे क्या करोगे, तभी तो कितने इंजेक्शंस लगते हैं हाथ में, स्टिचेस गिरते हैं, तो तभी कैसे करोगे, एक इंजेक्शन के लिए डरते हो ऐसे. तो वो मेरे दिमाग में था कि ऐसे पॉसिबल है क्या बिना इंजेक्शन का, बिना आईवी का प्रेगनेंसी. तो ऐसे ही 30th वीक चालू था, आउट ऑफ समवेयर मैंने ये भी, मुझे ये नहीं पता था कि ये एपिसियोटोमी होता है. लाइक मुझे लगा सिर्फ स्टिचेस का भी पड़ता है, जब सी सेक्शन होता है तब सिर्फ स्टिचेस पड़ते हैं, बट नॉर्मल डिलीवरी में नहीं स्टिचेस पड़ते. देन समवन टोल्ड मी नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिसियोटोमी. तो मैं उसके बारे में सर्च किया, क्या होता है, कैसे होता है. then I used to ask आरोही in 30th week कि अगर आपने अभी तक बिना एपिसियोटोमी का प्रेगनेंसी किया है क्या, डिलीवरी किया है क्या. तो शी टोल्ड मी हाँ किया है, दैट इज नेचुरल बर्थिंग. हाँ नेचुरल मतलब नॉर्मल बर्थिंग ना, तो पॉसिबल है ना नॉर्मल बर्थिंग में कि एपिसियोटोमी नहीं करने का. नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल इज अलग, नेचुरल इज अलग. ये क्या बात है, नॉर्मल सुना है, सी सेक्शन सुना है, ये नेचुरल क्या बात है. तो I dig more into that. So I told her कि क्या होता है ये नेचुरल. तो she told me कि ऐसे ऐसे होता है, डूला होती है, तो चाइल्ड बर्थ क्लास लेने पड़ते हैं. देन आई वर्क विद हर, लाइक मैं करती हूँ नेचुरल बर्थ बट आई वांट डूला विद मी ऐसे. तो शी इंट्रोड्यूस मी टू, शी गेव मी अ नंबर ऑफ स्नेहा. So yeah, so she gave me number of Sneha and Sneha Bakkal. So she wrote on that file Sneha Bakkal and phone number. That's it. You can contact her. I was like okay. तो तभी मेरा 30th वीक चल रहा था, तो मैंने वो आके घर पे देखा हो कि क्या करूँ, कांटेक्ट करूँ नहीं करूँ, क्या होता है क्या पता, ये डूला वूला कुछ नहीं पता, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ कभी कुछ सुना ही नहीं इसके बारे में. तो फिर मैंने सर्च किया क्या होता है डूला, फिर देखा कि आउट ऑफ कंट्रीज में तो कितना मतलब कॉमन है मिडवाइफ्स डूला, इंडिया में इतना नहीं है. फिर मैंने देखा कि स्नेहा बक्कल इतना ही लिखा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्कैन करते हैं, कैसे है क्या है, जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या करते हैं ये स्नेहा मैडम क्या करते हैं करके. तो मैंने इंस्टा पे रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा. पहले पहले नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे, अभी ये बर्थ अलाइज करके है. तो मैंने स्नेहा बक्कल डाला, डायरेक्ट यूट्यूब पे स्नेहा बक्कल डाला, क्या पता क्या मेरा दिमाग चला. मैंने यूट्यूब पे स्नेहा बक्कल तो नहीं आया, फिर मैंने इंस्टा पे डाला स्नेहा बक्कल, तो फिर वो बर्थ अलाइज करके आया. फिर आई वेंट टू दैट, फिर वीडियोस देखा, फिर यूट्यूब पे देखा क्योंकि बर्थ अलाइज करके अकाउंट है, फिर वो बहुत सारी वीडियोस थे, लाइक इंटरव्यूज थे, वो देखे. तो देखा कि ओके ये मतलब जैसे मुझे चाहिए वैसे ही कुछ तो है ये सब ऐसे. फिर
मैंने तो भी मैंने 10-15 डेज लिया, लाइक स्नेहा को कांटेक्ट करने से पहले मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, इज इट पॉसिबल, ये वो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाला, स्नेहा का, स्नेहा के मेंटर का, उनके मेंटर का, सब 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 निकाला एकदम रिसर्च रिसर्च किया। फिर आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट अ चांस, लेट्स कॉल। एक्चुअली मैंने इतना ही सोचा था, देखते कॉल करके क्या होता है, क्या बोलती है। फिर दोपहर को ऐसे ही मैंने कॉल किया कि हाय, मुझे आरोही मैडम से नंबर नहीं मिला आपका, कैसे होता है, क्या होता है। फिर स्नेहा ने सब एक्सप्लेन किया कि चाइल्ड बर्थ क्लास लेना पड़ेगा ऐसे वैसे। तो फिर अभी है अपकमिंग चाइल्ड बर्थ क्लासेस इन नवंबर, इन नेक्स्ट वीक ही था। तो फिर मैं घर पे, मतलब हस्बैंड शाम को आने के बाद मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा है एंड आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन बर्थ बर्थ क्लास विद मी। तो वो बोले हाँ हाँ चलेगा चलेगा। ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड देन मी, आई थिंक कि हाँ हाँ चलेगा चलेगा, करते करते करते। ओके करते। फिर चाइल्ड बर्थ क्लास अटेंड किया। फिर दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट एक्चुअली, अटेंडिंग अ चाइल्ड बर्थ क्लास। इट वाज सो नॉलेजेबल। लाइक अर्लियर आई वाज लाइक हाँ मुझे ना ज्यादा दर्द होगा ना, मैं बोलूंगी एपिड्यूरल दे दो मुझे, फिर मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकूंगी। ये कुछ तो थॉट प्रोसेस था, बिकॉज दैट इज इम्प्रिंटेड इन द कॉमन पीपल माइंड, आई थिंक। सो देर इज अ ऑप्शन ऑफ एपिड्यूरल ऐसे। तो आफ्टर अटेंडिंग द बर्थ class, childbirth class, I it opened a new perspective, I think, a new way to seeing a birth. तो वो बहुत हिट हो गया एक्चुअली, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर वी थॉट ऑफ कि प्लान तो था कि मतलब हॉस्पिटल बर्थ ही करना था। फिर ये होम बर्थ भी होता है ये भी नहीं पता था। तो स्नेहा बोली मैं तो होम बर्थ ही करती हूँ, मैं तो हॉस्पिटल बर्थ नहीं करती। अरे ये क्या है, ये होम बर्थ क्या होता है? तो फिर होम बर्थ का एक नया पूरा ये समझा कि ऐसे होम बर्थ भी होता है, ओके। बट एज वी वेर द फर्स्ट टाइम पेरेंट्स एंड थोड़ा सा ऐसे ये सब नया है और ये सब लास्ट 2 मंथ्स में ही समझ में आ रहा है हम लोग को, तो वी वेर लाइक क्वाइट अ स्केप्टिकल अबाउट द होम बर्थ। तो भी मतलब स्नेहा ने बहुत बोला कि होम बर्थ करेंगे करके, तो हम लोग बोला नहीं नहीं ये फर्स्ट टाइम है। तो मेरे हस्बैंड वाज ओके विद होम बर्थ, आई वाज नॉट ओके विद होम बर्थ एक्चुअली। सो आई थॉट नहीं नहीं हॉस्पिटल में करेंगे, देखते हैं क्या होता है वैसे। सो दैट वेंट एंड सब लोग बोल रहे थे कि 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद कभी भी होता है। 9 मंथ जैसे लगेगा, 8th कंप्लीट होगा, 9th मंथ जैसे स्टार्ट होगा, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योर हॉस्पिटल बैग, कभी भी जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। तो आई वाज ओके। तो 8th ऑफ डिसम्बर समथिंग मुझे 9th मंथ स्टार्ट हो गया एंड ओके मैंने सोचा। और मेरे कजिन का वेडिंग था 22nd को, 21st को एक फ्रेंड का वेडिंग था, मतलब दिसंबर फुल ऑफ वेडिंग और ये फंक्शन ही था। तो एवरीवन कभी भी हो सकता है, किधर जाना मत, बाहर किधर जाना मत, कभी भी हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है, ओके ओके। तो मैंने दिमाग में था हो जाएगा, बट ऐसा डर नहीं था कि क्या हो जाएगा, भागना पड़ेगा, ऐसे नहीं था। हाँ ठीक है, होगा होगा, देखते देखते, मतलब स्नेहा का नहीं, देखते देखते होगा होगा, कुछ शांति शांति ऐसे। तो मैंने इतना कुछ दिमाग में नहीं लिया, मैंने फुल एंजॉय किया। हल्दी था मेरे वेडिंग का फ्रेंड का, फुल एंजॉय, डांस बीन्स, 9 मंथ्स, सब लोग देख रहे हैं, अरे इतना पेट लेके नाच। हाँ नाचे तो नाच रहे हैं, क्या थोड़ी ना, क्या पैरालिसिस थोड़ी हो गया है, प्रेग्नेंट ही तो हूँ, ऐसे नहीं क्या सब लोग। अरे अरे बैठो 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 आराम करो। अरे नाचने दो यार, थोड़े दिन बाकी है, नाचने दो ऐसे। फुल एंजॉय किया, खाया पिया, मस्त वेडिंग पे गई, हल्दी एंजॉय किया, दूसरा एक वेडिंग था वो एंजॉय किया, बर्थडे पार्टीज एंजॉय किया। फिर 9 मंथ खत्म हुआ 8th ऑफ जैन को, और सबको मैंने बोल के रखा था कि एक दो स्कैन्स किए थे ना, तो स्कैन्स में आया था कि 6th ऑफ जनवरी डेट आया था। एंड आई वॉज वर्किंग एक्चुअली, माइन वॉज वर्क फ्रॉम होम, सो आई वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने 2nd ऑफ जैन से छुट्टी डाला, मैंने सोचा, मैंने मैनेजर को बोला मेरा 6th ऑफ जैन को डेट है, एक दो स्कैन में आया है, सो आई स्टॉप वर्किंग ऑन 2nd ऑफ जनवरी। टोल्ड मी ओके चलेगा। एंड टू एवरीवन आई टोल्ड कि 6th मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दिया है डेट।
सो 10th of January से सबका कॉल आना चालू कि हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या डिलीवरी, हो गया क्या. आई वॉज सो लाइक, मुझे टेंशन आने लगा, अरे ये क्या हो गया. सब लोग बोल रहे थे कि 9th month स्टार्ट होने के बाद कभी भी हो सकता है, और ये तो 9th month खत्म भी हो गया, अभी क्या करने का. तो फिर वी वेंट टू आरोही. सो आरोही टोल्ड अस कि नहीं, ये मतलब 9 months 9 days तक होता है, मतलब ये. तो वो आ रहा था 16th of January. तो तब तक देखते हैं क्या होता है 16th of January तक. स्नेहा तो हाँ नहीं, जब होना है होगा, कुछ टेंशन मत लो ऐसे. बट ये फोन कॉल्स ने थोड़ा सा ऐसे मैं डिस्टर्ब हो गई थी, लाइक लास्ट लास्ट वीक में, कि ये क्या है, सब लोग पूछ रहे हैं इज इट नॉर्मल, ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या. तो फिर 9 months 9 days कंप्लीट होने के बाद मैं सेम डे, लाइक 16th of Jan को 9 months 9 days कंप्लीट हो गया मुझे. एंड दैट डे आई वेंट टू आरोही फॉर चेकअप, जनरल चेकअप. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फर्स्ट टाइम मॉम्स को जनरली लेट होता है, सो नॉट नथिंग टू वरी इन दिस, वी कैन वेट अंटिल 42 weeks ऑफ कंप्लीशन. सो तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करना है तुमको, वेट करना है या फिर इंड्यूस करना है. मैंने बोला नहीं, वेट करना है, वेट कर सकते तो वेट करेंगे. तो फिर बोली क्या, ओके वेट करेंगे, लेकिन एक बार एक स्कैन करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, मतलब पानी वानी सब ठीक है कि नहीं वगैरह देखते हैं एक बार. ठीक है चलेगा, एवरीथिंग इज ओके, देन वी कैन वेट टिल कंप्लीशन ऑफ 42 weeks, मतलब चलेगा. तो मतलब और 10 days 10-12 days वेटिंग के लिए बोल रही थी. अदरवाइज फिर मैंने बोला फिर बाद में, बोली बाद में तो इंड्यूस करना पड़ेगा. मैंने बोला अरे इंड्यूस करना पड़ेगा तो इंजेक्शन आएगा, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन इंजेक्शन. So I was so much determined after that कि I don't want that induction, I want a natural delivery. तो फिर मैं नेक्स्ट डे स्कैन किया. नेक्स्ट डे स्कैन में एवरीथिंग इज ओके. और पानी का लेवल बढ़ गया था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल, हायर साइड आया था पानी का लेवल. एंड देयर वाज अ लूज कॉर्ड अराउंड द नेक. तो हम लोगों ने किसी को नहीं बताया ये पानी बढ़ गया है, कॉर्ड है गले में, किसको नहीं बताया, सिर्फ डॉक्टर को भेजा, स्नेहा को बताया. स्नेहा बोले ओके, डॉक्टर भी बोली हाँ नॉर्मल है, कुछ नहीं इतना. और फिर वी ऑल्सो वेंट कि हाँ चल नॉर्मल है, अभी ये बोल रहे नॉर्मल है तो नॉर्मल है, अदरवाइज एवरीवन इज लाइक कि एक जनरल कंसेप्शन है, कॉर्ड होगा तो फिर अभी सी सेक्शन ही होगा, अभी तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता ऐसे. तो मैंने किसको बताया ही नहीं, सुनने का ही नहीं है सजेशन किसका. तो फिर 16 17 को किया. फिर ऐसे था कि आरोही बोली स्विच ऑफ योर फोन्स, डोंट रिसीव दोस कॉल्स, की जो पूछने वाले कॉल्स है ना उठाओ ही मत, कि कभी होने वाला है, किधर है, क्या है, आना है कि नहीं बाहर, कुछ उठाने का नहीं, फोन ही स्विच ऑफ करो, दोनों भी, हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों को भी बोली. तो हम लोग फिर तभी रिलैक्स हो गए कि ओके ठीक है नॉर्मल है ये सब, किसको फोन ही नहीं उठाने का या फिर नहीं क्या इग्नोर मार देने का ऐसे. There was a wedding of my husband's cousin on 21st of January. वो भी मुझे अटेंड करना था, बट वो था एक्चुअली नासिक में. तो और आई वी वर स्टेइंग इन थाने, सो दैट इज समथिंग 200 kilometers अवे. सो हम लोग को, वो मुझे भी जाना था और हस्बैंड को भी जाना था, बट वो दूर पड़ेगा और एकदम ही वर्च पे थे हम लोग, कभी भी भागना पड़ सकता है. सो वी कैंसल दैट प्लान, अदरवाइज आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दैट वेडिंग एज वेल. सो 17th देन मैंने मैंने ऐसे दिमाग में सोचा कि मुझे वो इंडक्शन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ नेचुरल बर्थ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो फिर वो मैंने देखा डेट्स खाते हैं, और क्या क्या करते, कैस्टर ऑयल पीते, मैंने वो नहीं किया, डेट्स खाया मैंने एक्चुअली. तो फिर मैंने, मेरा योगा भी चालू था, प्रीनेटल योगा शामिली के साथ, फ्रॉम 34th week से वो चालू था. तो फिर उसको भी मैंने बताया कि अरे ऐसे ऐसे है, तो शी टोल्ड मी कि नथिंग टू वरी, हो जाएगा. तो फिर उसके साथ योगा करी थी. तो फिर मैंने स्टेप्स, मतलब 6,000 स्टेप्स तो तब तक मैं डेली चलती थी, तो मैंने 10,000 कर दिए. मैंने सोचा अभी चार जब तक नहीं होता ना तो 10,000 स्टेप्स चलूंगी मैं. सो आई यूज टू वॉक वॉक वॉक, मतलब 10,000 डेली कंप्लीट करके ही रात को सोने का, ऐसे मैंने टारगेट ही किया था. 10,000 steps on 20th of January. I went for a walk in the morning. और मैं डायरेक्ट मम्मी के घर पे पहुंची. मम्मी का घर आई थिंक इज 4 kilometers अवे फ्रॉम माई होम.
सो आई वेंट टू माई मॉम्स होम, चलते 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 गई ऐसे ही, चलो स्टेप्स भी कंप्लीट करना है। फिर कुछ तो 5,000 समथिंग हुआ था तब तक, 5-6,000। तो फिर सोचा कि और बाकी 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करना। फिर शाम को हम लोग गार्डन में गए, मैं और मेरी बहन, और फिर तभी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए। मेरवान्स में गए, मस्त केक भी खाया, पफ बिफ चिकन विकन सब खाया। फिर घर पे आए, फिर रात को बोला सिद्धि को नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नेक्स्ट डे 10,000 स्टेप्स चलेंगे। एंड तब मैं जब मेरवान्स में से खा रही थी, तो मेरे मतलब ऐसे दिमाग में एक थॉट आया कि जब होना है तब होगा, तो मैं क्यों स्ट्रेस लूं ना ऐसे। मतलब टिल देन आई वाज सीरियसली, आई वाज वेरी स्ट्रेसिंग कि कभी होगा कभी होगा। और स्नेहा ने तो मुझे पहले ही बोला था, स्ट्रेस लेके तो नहीं होगा, स्ट्रेस लेने का नहीं, स्ट्रेस फ्री रहने का। बट वो जब तक खुद को रियलाइज नहीं होता ना, तब तक वो नहीं होता है। कितना भी स्नेहा चिल्लाने दो, ने तो कोई भी चिल्लाने दो, भगवान भी चिल्लाने दो, अरे स्ट्रेस मत ले, नहीं होगा। जब तक खुद को नहीं समझेगा ना स्ट्रेस नहीं लेने का, तब तक वो होएगा ही नहीं। तो वो जब बैठी थी उधर, ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों डरने का है, जो होगा वो होगा ही ना। मतलब जो होगा अच्छा ही होगा। वो जो मेरा है दिमाग में, या फिर मेरे लाइफ के बारे में भी अभी तक होते आया है, जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। तभी मुझे लगता है कि नहीं ये क्यों हुआ, बट व्हेन आई कनेक्ट दैट डॉट्स, तो फिर रियलाइज, नो नो, दिस हैपन फॉर दिस रीजन एंड दिस रीजन इज अ गुड रीजन। ऐसे वो बाद में जाके पता चलता है। मेरा जॉब होने दो या फिर मेरा एजुकेशन होने दो, एवरीथिंग मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, बट मुझे मिलता है अलग। बट वो अलग मिलके बहुत अच्छा होता है ऐसे लगता है, वो बहुत लेटर रियलाइज होता है। तो फिर मैंने वही सोचा कि क्यों स्ट्रेस लेने का, जब होगा होगा। तो मैं एकदम स्ट्रेस फ्री, तब वो पॉइंट में मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई थी कि नहीं अभी सोचने का ही नहीं, जब होगा होगा। अपना रूटीन चालू रखने का थॉट ही नहीं लाने का, ये दिमाग में कब होगा ज्यादा सोचने का नहीं। एंड वेंट आई वेंट होम, आई वाज ऑल एंजॉयिंग मेरे फेवरेट वो कड़ी पकोड़ा एंड ऑल बनाया था। मम्मी ने मस्त खाया, और मैं मम्मी के इधर ही रुक गई। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने खाना खाया और आई वेंट टू लू एंड आई फाउंड आउट दैट देयर वाज सम ब्लीडिंग। तो मैंने स्नेहा को फोटो भेजा। तो स्नेहा बोली कुछ नहीं, नॉर्मल है, सो जाओ। ओके चलेगा, सो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं मतलब वो स्नेहा ने बहुत स्टोरी में डाला था, मतलब बहुत सिली है वो, कि मेरा घर मतलब मम्मी का घर, मेरा घर हार्डली 2-3-4 किलोमीटर अवे। तो आई थॉट ऑफ गोइंग टू माई हाउस, माई हस्बैंड वॉज देयर एट माई मॉम्स प्लेस ओनली, कि वो डिनर के लिए हम लोग आए थे। तो सोच रुकने का कुछ प्लान नहीं था, सोचा था घर पे जाऊंगी, फिर से कल सुबह उठ के मम्मी के इधर आके फिर गार्डन जाऊंगी, ऐसे सोचा था। फिर वो रात को म्यूकस प्लग निकला, तो उसका वो ऐसे पिंकिश समथिंग कलर का था, पिंकिश रेडिश करके। तो मेरे दिमाग में आया, मेरा जो घर का टॉयलेट है दैट इज डार्क ब्लू कलर का, उस पे कहाँ से रेड कलर पिंक कलर दिखेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ, कुछ हो गया रात को। तो मैंने सोचा रुकते इधर ही, मम्मी का तो व्हाइट कलर का था, तो मैं रुकते यहाँ पे ही। आई स्टेड बैक देयर। और फिर कुछ नहीं, दिमाग में आरोही को भी मैंने मैसेज भेजा कि ये ऐसे आया, शी नॉर्मल है, सो जाओ कुछ नहीं। और मैंने भी सोचा था, मैंने भी ऐसे सुना था कि ऐसे म्यूकस प्लग रिलीज होने के बाद तुरंत नहीं होता, सम टेक्स 24-48 आवर्स, ऐसे कुछ नहीं है कि म्यूकस प्लग रिलीज हो गया फटाक से अभी चलो चलो चलो, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी मच रिलैक्स। मैं सो गई, और मैंने लास्ट 11:54 को देखा फोन, और फोन रखा साइड में, और मैंने सोचा सो जाते हैं, अभी 12 बजे, 12 बज गए 54 हो गए, सुबह 8 बजे उठ के जाएंगे वॉक के लिए। तो You forgot that we had a call in the night before you going to sleep. हाँ हाँ हाँ, कॉल किया था यहाँ को कि ये क्या है, तो बोले नहीं नहीं नॉर्मल है, कुछ नहीं, सो जाओ कुछ नहीं होता ये। मैं ओके चलेगा, I had नॉर्मल है। only one thing in her saying, what if thing starts tonight and you really did not wanted your mother to be in your labor? तो बोले हाँ बराबर, बट ठीक है ना, अभी तो कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, और प्लान क्या है? तो प्लान ये है कि फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, अपने घर पे चली जाऊंगी, आई गो टू माई हाउस। बट शी डिड नॉट वांटेड टू हैव अ मदर बिकॉज her mother has fear. So she understood in her prenatal with me कि her mother had an traumatic birth, a forceps birth. So she would get her fear into the birth. So she wanted her mother to be away.
and not being involved. But eventually she was in that house when we were speaking, and we then slept. Okay, chalo, let's sleep. तो मैं सो गई और एग्जैक्ट 12 o'clock आई फेल्ट अ पेन. तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, ऐसे दुख रहा है. मैंने सोचा इधर का उधर में, ये साइड का वो साइड होने के बाद ऐसे थोड़ा क्रैम्पिंग होता है ना, तो मुझे लगा वैसे हो गया होगा. ऑलरेडी इट वाज 9 months 13 days समथिंग ऑलरेडी. हो गया होगा ऐसे क्रैम्पिंग टाइप. तो मैं फिर से 12 o'clock को मैंने देखा, 12 o'clock हो गए, मैंने फोन रख के फिर से सो गई. बट फिर से 12:30 को फिर से सेम हुआ, लाइक एग्जैक्टली हाफ आवर के बाद एग्जैक्टली सेम क्रैम्पिंग है. ये क्या हो रहा है ऐसे. आई डेंट बॉदर, मैंने बोला छोड़ दे. मैंने दिमाग में भी नहीं आया कि ये लेबर पेन हो सकता है करके. फिर से 11 o'clock को आया, नहीं 1 o'clock को आया, लाइक हाफ आवर के बाद आया. तो फिर मैंने बोला अरे ये कुछ तो अलग है, ये कुछ तो अलग है. तो फिर उसके बाद 20 minutes के बाद आ रहा था. 1 को आया, फिर 1:20 को आया, 1:40 को आया, 2 o'clock को आया. फिर वो पैटर्न आ रहा था 20 minutes के बाद. एंड आई वॉज लाइक फोन ले लो, अच्छा ओपन करो, और फिर स्टॉप वॉच लगाओ, जैसे सिखाया था स्नेहा ने कि काउंट करना है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए है, कभी कितने टाइम के लिए है. स्टॉप वॉच, फिर नोट्स फोन में ही. फिर वो नोट डाउन करी थी. एंड हस्बैंड वाज स्लीपिंग बिसाइड मी. ही वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ कि मैं क्या कर रही हूँ, उठ रही हूँ नहीं उठ रही हूँ, कुछ नहीं, वो मस्त सोया था. फिर अराउंड 3 o'clock मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, ऐसे मतलब भी पेन भी आ रहा था, ऐसे लग रहा था वॉशरूम का पेन आ रहा है. तो फिर आई वॉज लाइक बार बार वो वॉशरूम के लिए जा रही थी. तो वो डोर का आवाज बंद चालू होगी. फिर मेरा हस्बैंड उठा, क्या हुआ इतना बार क्यों जा रही है वॉशरूम के लिए. बोला ऐसे ही सो जाओ, कुछ नहीं, ऐसे ही सो जाओ. मुझे वो पैनिक मोड ही नहीं चाहिए था. मैं हूँ, बस हूँ मैं, लेकिन बाकी की नहीं पैनिक होनी चाहिए ऐसे. तो मेरा कुछ नहीं, सो जाओ, कुछ नहीं. तो फिर ही गॉट टू नो कि मतलब वो ऐसे क्रैम्प हो रहा था, मतलब पेन हो रहा था, तो वैसे एकदम स्टिल फिर रिलैक्स ऐसे होता है ना. तो फिर ही वो कब, तो फिर वो नोट करने लगा. मैंने बोला तुला शिकवलंय ना आता, तुम ये नोट करो चलो. तो फिर वो टाइमर और स्टॉप वॉच लेके बैठा था, नोट्स लेके बैठा था. तो वो ये करा था. फिर अराउंड आई गेस 4 o'clock स्नेहा को कॉल किया ना, 3:30 4 o'clock. मैंने बोला, वो तो 3 बजे से ही बोल रहा था कि फोन करते क्या, डॉक्टर को फोन करते क्या, स्नेहा को फोन कर. मैं नहीं नहीं रुको रुको, अभी तो आई कैन बेयर द पेन, सो डोंट कॉल हर. क्यों उसका रात का नींद क्यों खराब करने का ना, खाली फुकट का सोने दो भाई थोड़ा, मैं पेन सह लूंगी. तो आई वॉज बेर करी थी 20 फिर 15 minutes अपार्ट आया. फिर 10 minutes अपार्ट जब आया ना, 10 to 8 minutes अपार्ट जब चालू हो गया ना, वो 4 o'clock से स्टार्ट हो गया. दैट टाइम आई वाज 5 minutes तो ऐसे ही जा रहा था, और फिर फटक से पेन, रुको फिर से पेन, ऐसे ही हो रहा था. तो फिर तभी 4 o'clock को आई कॉल्ड स्नेहा. तो स्नेहा ने फिर देखा, वीडियो कॉल पे देखा, बात किया. फिर वो बोली कि और 1 घंटा देखते, 5 बजे तक सेम पैटर्न है क्या, क्योंकि पैटर्न कभी भी ब्रेक भी हो जाता है बीच में. तो शी सेड कि 5 बजे तक देखते, सेम पैटर्न होगा तो यू लीव टू द हॉस्पिटल एट 5 o'clock. ओके चलेगा. तो फिर वो दिमाग, फिर तब तक मम्मी भी उठी थी. मम्मी मतलब ये सब फोन कॉल वगैरह हो गया, तो मम्मी भी उठ गई. तो मम्मी बोली क्या होता है, कहा था हॉस्पिटल. नहीं नहीं थामा, रुको रुको रुको, हॉस्पिटल इतने जल्दी नहीं, रुको. अरे क्यों नहीं हॉस्पिटल, रुको रुको, पेशेंस, हैव सम पेशेंस. तो फिर मैंने मस्त एकदम, मैंने अभी हॉस्पिटल जाना है, मस्त नहा धो के जाते एकदम. तो आई वेंट फॉर शॉवर, मस्त एकदम बाल वाल धोया, एकदम चंपी किया था रात को, ऑयल मसाज मम्मी ने किया था, मस्त बाल वाल धोया, बाहर आई. फिर हेयर ड्राई किया. पेन चालू है, हाँ पेन चालू है. मस्त कॉन्ट्रेक्शन चालू, एकदम अच्छा वाला कॉन्ट्रेक्शन चालू है. 5 5 minutes अपार्ट आ रहा था, तभी तो 5 5 minutes अपार्ट आ रहा था. ऐसे हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई करी, रुक रही हूँ, फिर से हेयर ड्रायर से. मेरी मम्मी देख रही है, मेरी बहन देख रही है, व्हाट इज दिस चालू है. My husband was also supporting me. Okay, do your thing, do your thing. Then my husband went to our home. He brought that hospital bag. The birth ball was there at my home. He brought that birth ball as well. Then we went to the hospital. फिर स्नेहा आई, I think around 6:30 ना something. We went to hospital.
एंड फिर तब भी तो हॉस्पिटल में डेंजर पेन बट वो एक स्नेहा ने बोला था वी शुड वेलकम द पेन, पेन नहीं है तो क्या मजा है ना, पेन चाहिए अपने को, पेन चाहिए अपने को, तो वो दिमाग में था कि नहीं पेन चाहिए। आई वॉज ऑल ओके लाइक जब तक सुई नहीं है ना आई एम ऑल ओके, मैं कितना भी सह लूंगी, वो मेरे दिमाग में था ही, मतलब अभी भी है, कितना भी सह लूंगी, सुई नहीं चाहिए। तो फिर बहुत लाइक 6:30 7 o'clock समथिंग वी वेंट एंड फिर अराउंड 8:30 9 o'clock ना 9:15 को डॉक्टर आरोही केम इनसाइड द रूम एंड शी टोल्ड मी कि लेट्स चेक कि हाउ मच यू आर डाइल्यूटेड। मैंने ओके Uh, चलेगा। but you were like as we reached, we asked your parents mother to go, so she went, and then the vitals were checked by the sister, and you हम्म said, "Okay, let me go to the toilet," and हम्म then hot water toilet was on, हाँ and ऑन after या that she came in. So for getting you out of the toilet was a task. She was like, "Yeah, या everything here. I'm not going out of the toilet." See, yeah, the Sneha and my husband both were continuously pouring hot water on me, like on my back, because that was making me much more relief. The hot water thing was much more relief. So I was like, pour hot water, Sneha, Sneha, Sagar, Sagar. I was just screaming those two names throughout, throughout, I think. So I was continuously sitting in that toilet with the hot water pouring on me, and around 8 9 9:15 Arohi came, and Dr. Arohi came, and she told me that let's check how much you're diluted, just come for 5 minutes, we will check. I was like okay. I was not able to like come outside that washroom. I was so comfortable in that hot water. I was like, no, no, whatever you want to check, check here. I will not come outside. No, don't do like that. Just for 5 minutes, and I was, then you go back. I said, okay. Then when I came outside, she checked me, and I was already 8 centimeter dilated. And she told me, okay, you're 8 centimeter dilated, and मुझे उसके आवाज से ऐसे कुछ तो समझा कि कुछ तो गड़बड़ है, बट मैंने वो मेरे दिमाग को नहीं बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने मेरे तक ही रखा, मतलब कि मुझे समझा कि कुछ तो गड़बड़, जैसे वो ऐसे आया उनके इससे, और फिर वो मुझे इतना ही बोला कि ओके 8 सेंटीमीटर, यू आर 8 सेंटीमीटर डायलेटेड। कब मतलब फिर से क्या बोली वो कि कभी भी हो सकता है, लाइक डोंट गिव अप, कभी भी हो सकता है ऐसे। तो फिर वो बोले कि अंदर मत जाओ, वॉशरूम में मत जाओ, बाहर ही रुको, कभी भी हो सकता है ऐसे। तो फिर मैंने फिर क्या हुआ, हम लोग ने ये किया था ना, इन्वर्जन्स किए थे। हाँ तो फिर basically, I would add that she had a very confusing state of face when she did her PV, and she looked at me. Obviously, she does that every time, and like, ah, ठीक है, good, 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 good. Then she like, Sneha, can you come out? I like, yeah, I'll come out. So then I was like, yeah, tell me what happened. What did you find in your findings? Like, see, Sneha, the suture of the baby's head is still transverse. So it's not very optimal. So like gynecists are taught that the optimal position is only the proper cephalic, everything should be optimal for them for the birth to happen. So, and in one of the PVs, which she did it around 40 weeks, I guess. There, that time also the sutures of the baby's head were transverse. So that was the time when she again called me, Casey, the sutures are transverse. So I told her, what does that mean? What does that mean? Like, it's not optimal snake. I was like, okay, births can happen, right? Even breaches happen, face presentation, because that was the only time when I did face presentation in Bangalore, right? Remember, so before her birth, so I was in Bangalore while she was 40 weeks. I completed that birth. When I came back, and so I did a face presentation, so I knew that face ho, sir ho, bachcha aayega. And then I was like, ठीक है, transfers है तो transfers है.
But now again in the finding, it was that the baby is still high and the sutures are transverse, but the she's good dilated. So then again, I called my teachers, and they were like, "Okay, let's do homeopathy and inversions and rebozo." So these were the three tools we did. I gave her homeopathy, the magical, or I would say miraculous remedy which works on these mothers. So I gave that dose, and we did inversions on the bed, and we kept the husband was sitting so that she could get support. We did twice or thrice only, and just after the inversion, we asked her to come down. All of this were happening in intense pain. Obviously, 8 centimeter or more, that is intense pain. And then rebozo, a rigorous rebozo was done. And twice or thrice, again, she's like, I'll go to the toilet. She went inside, did some, took again hot water. Then again, we called her once, did inversions. And after that, the doctor had to go for some meeting in the same premises. She went, and I got 8 centimeter hai, and still pushing wala urge nahi aaya. There was no transition feeling for her, like those mothers who sleep. So we know, कि हाँ, अभी वो सो रही है. It's the time when she'll start pushing. That was nothing for her. She was like, so I was like, okay, you go and have your complete your meeting and come. Now I was sitting behind her, and the hip squeezes she wanted were like, squeeze, just squeeze me. And so I was giving that hip squeeze, sitting on the birth ball. She was up there, all fours hip squeeze, and the husband was in front of her. It happened. The things were continuing. And later, her husband is looking at me and saying, look down. And I was, so she was very tall. And I was having the birth ball. I was on the birth ball. And he's like, look down. Just down. And then, so actually, he was the one who caught the baby. So the baby slipped. He removed the cord around the neck, which was there. And the birth happened. And no one was there. It was only me. The husband caught the baby. And, but yeah, she was yelling her heart and lungs out for while the baby was coming out. But the baby came out nicely. But before that, she was screaming. And then her sister was there. The doctor knew, oh, the birth happened. Kalas. So she completed her meeting and then came to us. The sister came in, and the baby boy was out. So it was a very quick, so the findings were important. The inversions, the homeopathy, the rebozo were beautifully worked together. Yeah. Superb, amazing experience, I must say. It was amazing experience. Totally new, totally. It will stay with me for lifelong experience, I must say. And after like delivery, after the birth, I think in 1 hour I delivered the placenta. I think in 1 hour, yeah. In next 1 hour I delivered the placenta, and I was in a different room, and I have booked another room. So that was occupied when we came in the morning. And after delivery, I was standing, and I walked till my room. I was all okay. The nurses were looking at me. How you are walking? Just now, hour before you birth a baby boy. How you are Yeah, and there were no walking? tears. So there were no tears. There was nothing. We just had a good time. We had delayed cord clamping for 2 hours. And by 11:30, the birth happened. The placenta came in another hour. And for after that, by 1:30, we cut the cord. And things were done. Alhamdulillah. So it was very quick, as in it's very hard for us sometimes that we go to the hospital and we have to wait because mothers are not dilated and things will take time. But hers was like quick, 8 centimeter over there, did some things, it was out, and I was back home. So it's rare sometimes. It takes really good time when I go to the hospital births. But yeah, Sailee was one of those who did it very quick. Any questions, anyone? To Sailee? I would like to ask, inversions meaning what? She was made to go with the head down and legs up?
Yes, yes. Head down. So yeah, Not exactly legs up, but head down. I was on my knees and head down. Okay. Yeah. but on a higher position, like for on the bed, we usually do it on sofa and the floor. So the mother is on the Hmm. sofa, her hair, her butts goes up, and she's coming down, and her hands are on the floor or the pillow. Yeah, Complete complete. So that hands was the are there. inversion. Any more questions? So then her families, they came, the mother came, and she was telling her relatives something like natural, what I don't know, she's called natural birth. She has done it. We don't know what it is. So yeah, that till that time she was telling me that I'm a doctor's assistant. I have also gone to her house once. So later they understood, okay, she's a doula. What about your periods now? uh, Currently I'm breastfeeding, so I don't know when I'll get my periods back because I'm breastfeeding. Okay. Yeah, my baby is 7 months now. Okay, okay. Yeah. And earlier on, did you have any side effects because you used to not get your periods regularly? No, no, nothing kind of thing. No side effects. Did you put on too much weight or No, something? no, no. Nothing. No, normal BMI, nothing, no pimples, no hair fall, nothing. Okay, okay, okay. Yeah. I see. Wonderful. Anyway, I would love to meet you, Sailee, in Pune. Yeah. Where you stay in Pune exactly? I will send you an invite. I Okay. think I would love you to meet there at Yevlewadi. Okay, okay, okay. Sure, sure. Okay. Yeah, yeah. So Sneha, I put the invite in that group, no, Mhm. Sneha, in that justified group. So you can share it with her. I'll put it in the other group also. Yeah, yeah. And they are going to start a maternity center, and I want mothers who've had natural birth, to come and speak. And your story is especially interesting because you've had PCOD. Lot of people are suffering and they think it is the end of the world. Ho Correct. gaya, khatam. Hmm. Not like that. Plus the attitude. See, now you're like such a happy person. Ha, theek hai, hoga, hoga. Sneha is like that. So she is infectious, she makes everyone. "Ha, so jao." That Sahi is baat your hai. USP, Yeah. really. That is the best advice you can give someone. Correct. So, anyway, very nice story. Okay, there is a question I think I want to ask. Last camp period is how much? So it was 17, I think. 15 or 17, I think. It needs to be lowered in the last few days of pregnancy, so that the baby descends down. In my case, it was opposite. The fluid was very much, so that I the maybe because of that reason the baby was floating upside till the last day, or till the intense last pain. The baby was floating. Because of that reason, might that be the reason in my case, because of the high fluid. But there was no major rupture of membrane, like, it did not come out. We did not have the gush water flow in your case, Sailing. There Right. was one time the membranes, yeah, that was the plus point we had, because for doing inversions and homeopathy and everything to do together, we did not wanted to lose the water bag. The water bag, if it's there intact, it is easier for the baby to do the, synchronization to get into the pelvis and the birth canal. So that was the thing, that her water did not break. So we took that opportunity to complete it as soon as possible, to do all these inversions and stuff. But I think the water was not that great gush flowing. It came out normally only.
question? There's someone else who wrote something. I am not getting it. Hmm. Thanks. Mine has higher than yours. Polyhydramnios. Yeah, polyhydramnios is the case where the water levels are too much than the normal thing. But I was polyhydramnios at the first, in my first pregnancy. But I had an abnormal birth, normal induced birth. But yeah, always having mindful eating, drinking well, hydrating, and keeping your head space in peace and calmness is very important for going into labor. So she actually birthed at proper 41 weeks in 3 days, which is the average for a first time mother to give birth, or any mother. So usually people don't wait up until for 40 weeks. They want to do something in normal hospital scenarios. But yeah, Sailee gave birth without induction at 41 weeks and 3 days. Yeah, generally, universally, it is like majority of the first time moms, like 90% of the first time moms are delivered at 40 weeks, 41 weeks, 3 days. That is the like highest, like that is the mark. Hmm. And very less, like 10% are there who go beyond that till 42 or more than that. Hmm. Okay. True. Again, it's about natural spontaneous labor and not induced and then getting a baby at 40 weeks or on the due date. But yeah, stress-free mind really works in this thing. Stress-free mind. Whenever we like हम लोग खुद को ये करते ना, नहीं जो है भगवान देख लेगा, क्यों टेंशन लेने तभी सब चीजें आराम से होता है। ऐसे जब तक हम लोग वरीड है ना, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, सी सेक्शन ही होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, पॉटी कर देगा, वो होगा, ये क्या सोचने का ही नहीं, सोचने का ही नहीं, जो होगा अच्छा होगा बस। In Mumbai's language, bindas रहने. बिंदास रहेगा। So yeah, now she is And into. Sneha used to ask me, how you feel? Lay bhari, Sneha, lay bhari. So Laibari After means birth amazing. also, after birth also, how you are feeling? Lay bhari. I was there, like I was there sleeping. I was feeding the baby. Na instantly I fed the baby, and he was also nicely latching. And Sneha, how are you feeling? Like lay bhari, lay bhari, Sneha. Yeah, and then I everyone can't came thank in. enough Sneha, Dr. Arohi, because these people came into my life and they changed everything, my perspective. And I'm raising a child now, and that uh, do really matters, that how you deliver or how you approach the things or how you see the world or what is there in your head. Hmm. And because I don't know it is with everyone or not, but as I have delivered naturally, and now from that day onwards I am more prone towards the natural part of the of everything, I must say. Hmm. Whatever it may be, I search for the natural way to correct that thing. Maybe it could be illness, or it could be disease, or it could be anything. I am more into like, oh, there could be a natural alternative. Being there in the pharma company, I know that if one drug is curing you for a better thing, there are 10 underlying side effects comes with that. Yeah. Yeah, so that is the there is a pros and cons also, but nature has given us so much good thing without side effects, so let's do that. So, वो दिमाग हो जाता है, like naturally एक बार ये naturally से गए ना तो सब naturally करना है बस. Now my baby is cough, is having cold and cough, but I'm not much worried about it. हो जाएगा clear, और normal है, cough cold तो सबको होता है, panic क्या करना है उसमें, Yeah. सब है, normal है ऐसे. While others are getting antibiotics, you're just waiting for it to self-cure, Yeah. as well as you doing things which will help the baby. And breastfeeding is always there. Like for me, it had never been an issue where I was breastfeeding my children.
because breastfeeding आधी चीजें solve कर देता है, no? There are so many कर देता है. antibodies which will help the baby. So chill out. So then, so we are like now like friends. Whatever she wanna do in life in terms of her child, it's like, so Sneha, let's understand what is this. So basically, she is in now. I just see her to be a next childbirth educator, but I don't know when. कुछ ना कुछ तो करेगी ये in the field of birth, inshallah. So that's what I pray for her. And thank you everyone for joining in. It was fun, Sailee. Thank you for giving a hope, because for everyone it feels कि अगर PCOD, PCOS है, then you can never be pregnant. If you even if you're pregnant, don't think about natural birth. So you kind of strike them all off. So Yes. things can happen. You just have to be open. You just have to be mindful. You just have to be researching, educating yourself, and then things happen. So thank you so much for an amazing PCOD related pregnancy and a natural birth. Thank you so much. Thank you so much, Mona. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you so much. Thanks, Bye. Heidi. Yeah, bye.